because now we are going to the solution. So the question is like that: using generating function, solve the recurrence relation, an minus 7an minus 1 plus 10an minus 2 is equal to 0 for all n greater than 1, and a0 is equal to 3 and a1 is equal to 3. Both are 3 are given. Okay, that is the problem. Very important problem, and you have to solve it by using the generating function method. So in the generating function method, we will take that gx be a generating function of that sequence n, that because we are finding the n. So if you can find the gx, then from the generating function we can go to that sequence, na? Because just we have seen that how to just extract the sequence from the generating function. So that means if we can extract the generating function, then we can also extract the sequence from the generating function. So first here we find the generating function, then from the generating function we will extract the n. That is the process. So to do that, we assume that this gx is a solution of that series. That means gx is a generating function of this an sequence. So first of all, just write as it is the function generating the recurrence relation, which is an minus 7 an minus 1 plus 10 a of n minus 2, and that is equal to 0. And let us take that. So let that gx be the generating function, of that sequence, of the sequence n, okay. That is, this g of x is equal to sum over n is equal to 0 to infinity an x to the power n, because n is the sequence. So obviously its generating function will be what? N is equal to 0 to infinity an x to the power n. Now give it equation number 1, and now the second step is multiplying equation 1 by x to the power n, okay, because we will build that term in that recurrence relation. So that's why we are multiplying this an by x to the power n first, and then we are using, or we are summing that, summing from n is equal to 2 to infinity, okay, not n is equal to 0 to infinity, okay. We are taking it n is equal to 2 to infinity. Why? Because if you take n is equal to 0 to infinity, then this term will gives you minus 2 term, na, a of n minus 2. So if you taking the summation from 0, so it will gives you a 0 minus 2, that means a of minus 2, and we don't have a minus 2 term because our sequence start from a 0. So the first value what you will get, it will be the 0 point. So that's why we are summing it from n is equal to 2. If there is n minus 3 term, then we will summing it from n is equal to 3. That means if it is a order k recurrence relation, so we will taking the sum from k to infinity. Is it clear? Yes, sir.
So then just take a product with x to the power n, that means an x to the power n minus take the 7 into a of n minus 1 x to the power n, then plus 10, then a of n minus 2 into x to the power n, and that is equal to 0. Then so first we take a product with x to the power n with each term, then we take the summation over n is equal to 2 to infinity, summation over n is equal to 2 to infinity, then summation over n is equal to 2 to infinity. Clear? So first take a product with x to the power n with each term, then take the summation over n is equal to 2 to infinity. Now the problem is our gx function is n is equal to 0 to infinity, but here we have n is equal to 2 to infinity, so we can't actually replace gx here. So that's why we will complete the series here. So how to complete the series? तो जो टर्म नहीं है वो ऐड कर देंगे, वही तो. सो दैट मीन्स सम ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लेंगे. चलो तो इससे 0 टू इन्फिनिटी ले लिया. अब इसको a ऑफ n x टू द पावर n कर दिए. प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पर? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज वी हैव टेकन टू टर्म एक्स्ट्रा. फर्स्ट टर्म इज व्हाट? a0 एंड सेकेंड टर्म इज a1x, क्योंकि वो दो टर्म तो नहीं था. So that means you have to take the a0, you have to exclude that and minus what? a1x. देखो, is it clear or not? It is the most crucial step here. If you do it well, then you don't have any problem in the next. So here you have to build the gx series. To build that, actually our series start from where? If you put, just look on that. So n is equal to 2, that means first term will start from a2. देखो a2 x2, then next term is what? a3 x3, then a4 x to the power 4. तो ये actually हमारा series है, but we need that series. We start from the 0, यानी कि इससे आगे भी जो दो टर्म है वो भी मुझे चाहिए, कि हमको a1x भी चाहिए और a0 भी चाहिए. So that means these two are the extra terms, these two. That means this term, that a1 of x and that a0, these two terms are extras. So actually this whole series now presented by that, but the problem is in the originally in the above term these two terms are not there. So we have included that. So that's why you have to exclude this term. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. We will do the same thing for the second step, but before that we have to make the term, make the actually order same. Here it is n minus 1, but here it is n, so it is a problem. So take 1x outside first of all. স্যার বলছি তাহলে ফার্স্ট টাইম যখন নিয়েছিলাম তখন ওই 2 থেকে ইনফিনিটিটা কেন নিয়েছিলাম একবার বলুন। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে দেখো, যদি না নিতে, সাপোজ 0 टू इन्फिनिटी নিয়ে नियेছো, यू हैव टेकन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा? तो अगर 0 टू इन्फिनिटी अगर लोगे तो यहाँ पर जब 0 पुट करोगे तो टर्म क्या आएगा? 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2 आएगा ना. कहाँ से आएगा मेरा ये माइनस 2 टर्म? आवर इनिशियल वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम व्हेयर? 0, a0. तो a0 से हमारा इनिशियल स्टार्ट हो रहा है. तो अगर हम n को 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये वाला फाइनल सीरीज में क्या होगा? देखो यहाँ पर, देखो ये 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ पर पहला वैल्यू क्या प्रोड्यूस हो रहा है? a0 x टू द पावर 2 ना. इस सीरीज को देखो, सेकेंड वैल्यू क्या हो रहा है? a1 x टू द पावर 3. तो अगर तुम 0 से ले लेते तो क्या प्रोड्यूस होता? सपोज ये ना लेकर तुम 0 से ले लिया, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो पहला वैल्यू क्या प्रोड्यूस होता? a माइनस 2 x टू द पावर 0 ना. उसके बाद a माइनस 1 x टू द पावर 1. तो ये सारा वैल्यू हमारा कहाँ से आएगा? तो -2 x टू द पावर 1 এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে. তো एक्चुअली आवर वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम a0, दैट्स व्हाई वी कैन टेक दैट. तो अगर यहाँ पर n-3 है तो 3 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनिशियल 0 ही है, इनिशियल से हम आगे नहीं जा सकते. ठीक है.
तो बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म है वो हम प्रोड्यूस कर लेंगे यहाँ पर. सो दैट्स वाई इफ यू जस्ट सी द नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट में प्रॉब्लम क्या हो गया, नेक्स्ट में प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर n है. सो दैट्स वाई वी विल टेक वन x आउटसाइड. पहले एक x को आउटसाइड ले लो, तो यू विल गेट 7x, ब्लैक कर लेते हैं. सो यू विल टेक इट -7x, देन सम ओवर 2 से इन्फिनिटी तक ही रहने दो, एंड देन इट विल बी a ऑफ n-1 और x टू दी पावर क्या हो जाएगा n-1. ठीक है. देन यहाँ पर भी वही सेम थिंग करना है. 10x² का आउटसाइड ले लो, 2 टर्म बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n = 2 से लेकर इन्फिनिटी तक a ऑफ n-2 और x टू दी पावर n-2 = 0. देखो इस स्टेप तक ठीक है या फिर नहीं है? This is very important problem. বলো প্রবলেম আছে না ঠিক আছে এই স্টেপটা? স্যার ওই থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যে টার্মটা লিখেছেন ওটা কেন একটু বলবেন, কারণ ওই টাইমটা একটুখানি অফ হয়ে গেছিল. ঠিক আছে, এখানে দেখো তো n = 2 to infinity n x to the power n টার্ম আছে আমার কাছে. তার মানে এই টার্মটা যদি আমি লিখি তো কিভাবে হবে? ফার্স্ট টার্মটা কি আসবে তাহলে? সাপোজ n = 2 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, তো ফার্স্ট টার্ম ইজ a2x², তাই তো? ফার্স্ট টার্ম ইজ n = 2, দ্যাট মিন্স a2x to the power 2. সেকেন্ড টার্ম ইজ a3x to the power 3, then a4x to the power 4. But our original series gx is that, gx क्या है? n = 0 to infinity, that means first term is a0, second term is a1x, third term is a2x², then fourth term a3x³, then a4x to the power 4. तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन. तो जिस एक्सप्रेशन में से यहाँ पर हमारा a2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, बाकी सारे है, कौन 2 टर्म नहीं है? ये 2 टर्म नहीं है, a0 और a1. तो इस टर्म को हमको ऐड करना है वहाँ पर. सो वी हैव टू ऐड दिस 2 टर्म हेयर, दैट मीन्स a0 एंड a1x. तो एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो अगर इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है. सो दैट्स वाई वी ऐड दिस एंड देन वी सब्ट्रैक्ट दिस, दैट मीन्स a0 माइनस a1x. तो अब देखो ये जो पहला जो एक्सप्रेशन है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो टोटल और इसके बाद भी इन्फिनिटी तक है, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हो गया सीरीज से n = 0 to infinity n x to the power n, और बाकी ये 2 टर्म यहाँ पर रहेगा a0 माइनस a1x. नाउ इज इट क्लियर? এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার. আচ্ছা, and for the next 2 term বলছি সেকেন্ড যে টার্মটা আছে 7x সামেশন n = 2 থেকে ইনফিনিটি, ওটা তো আমি n = 1 থেকে ইনফিনিটিও নিতে পারতাম. হ্যাঁ নিতে পারতে. তো এবার আসছি ওটা, তাহলে তো নেগেটিভ আসতো. কিন্তু সবগুলোকে তো একটাই দিতে হবে, আলাদা আলাদা সাম দেবো কি করে? উই আর টেকিং দ্য সাম অন দ্য হোল ইকুয়েশন, পুরো ইকুয়েশনটা দিচ্ছি না, উই আর মাল্টিপ্লাইং বাই. হ্যাঁ, কিন্তু যদি ওটা n = 1 হতো তাহলে তো আমার a0 চলে আসতো. হ্যাঁ, n = 1 থেকে যদি স্টার্ট করতে, সাপোজ ইউ আর টেকিং n = 1, তাহলে এইখানে আমার এসে কি টার্ম প্রডিউস হতো? ফার্স্ট টার্মটা a-1 হতো না? তুমি তো আলাদা আলাদা দিতে পারবে না, মানে ak1 ak2 ak0 দিতে পারবে না. উই আর টেকিং ইন দ্য হোল ইকুয়েশনস, পুরো ইকুয়েশনে এই সামটা দিচ্ছি আমরা. আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ো. মাল্টিপ্লাইং ইকুয়েশন 1, আমরা ইকুয়েশন 1 কে মাল্টিপ্লাই করছি x টু দি পাওয়ার n দিয়ে, অ্যান্ড দেন সামিং ফ্রম n = 2 to infinity, দেন পুরো ইকুয়েশনটার উপর সাম চাপাচ্ছি n = 2 to infinity তে. তার মানে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি দিচ্ছি না, তার মানে এমন একটা দেবো যাতে করে কেউ নেগেটিভ না হয়. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি. আমরা ইন্ডিভিজুয়াল দিলে ঠিক ছিল, কিন্তু আমরা তো ইন্ডিভিজুয়াল দিতে পারবো না, আমরা হোল ইকুয়েশনে করছি. তার মানে অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লাইং বাই x টু দি পাওয়ার n, দেন টেকিং দ্য সামেশন ওভার n = 2 to what? ইনফিনিটি. এইটা করছি আমরা. এইবার এটা ছড়িয়ে লেখা আছে, দেখো n = 2 to infinity an x to the power n minus 7 n = 2 to infinity n minus 1 x to the power n, এইভাবে লিখেছি. তার মানে একটা স্টেপ এটা বোধহয় করলে ভালো হতো এর উপর, নাকি? না না, বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে. সো দেন
চলে এসো এবার এটাকে আরও বিল্ড আপ করতে হবে। সো ফার্স্ট টার্মটা জাস্ট কিপ ইট অ্যাজ ইট ইজ, বিকজ ইট ইজ অলরেডি উই ক্যান রিপ্লেস দ্য জিএক্স উইথ দ্যাট, তো এখানে জিএক্স রিপ্লেস করে দাও। সো ইট ইজ জিএক্স মাইনাস এ জিরো মাইনাস এ ওয়ান এক্স, জিএক্স রিপ্লেস করে দিয়েছি, তো একেও জিএক্স করতে হবে। আবার চলে এসো হোয়াট ইজ দ্য সিরিজ অ্যাকচুয়ালি দেয়ার, জাস্ট ভিজুয়ালাইজ দ্য সিরিজ হেয়ার। सो हेयर द फर्स्ट टर्म स्टार्ट विथ व्हाट, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा a1x ना, देखो एक एक करके टर्म प्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज a1x, सेकेंड टर्म में क्या आएगा n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a2x स्क्वायर, देन a3x क्यूब ना, देखो yes, तो मिसिंग कौन सा टर्म है यहाँ पर, a0 मिसिंग है ना, तो अगर yes, इसको हम gx लिखेंगे तो a0 मिसिंग है, दैट मीन्स वी हैव टू गिव द a0 हेयर। सो इफ यू पुट द a0 हेयर देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट a0 फ्रॉम देयर, यही तो ये वाला सीरीज रिप्रेजेंट हो जाएगा और ये a0 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स सिंपली द नेक्स्ट टर्म इज माइनस 7x इंटू सम ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ले सकते हैं अब हम इसे, और इसको हम टोटली सीरीज में ही चेंज कर देंगे, ए एन एक्स टू दी पावर एन ही लिखेंगे और माइनस क्या देंगे a0। देखो ठीक है कि नहीं, बार is this is just the representation of the above term, nothing else। तो पहले हम n इज इक्वल टू 2 पुट करके सीरीज को प्रोड्यूस किया, जो मिसिंग है वो यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, उसके बाद देखो टोटली इसको सीरीज फॉर्म में लिख दिया, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर n माइनस a0। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चले एसो, नेक्स्ट टार्म में तो एक ही काज करब, सेम थिंग्स वी विल डू द सेम प्रोसीड्योर हेयर ऑल्सो। सो n इज इक्वल टू 2 से पुट करेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या आएगा a0 x टू द पावर 0 मीन्स 1, सेकेंड टर्म क्या आएगा a1x, थर्ड टर्म a1x इसको, तो एक्चुअली ये gx सीरीज ही है, कंप्लीटली gx हो गया। तो इसको तुम डायरेक्टली n डामी को n इज इक्वल टू 2 से लेकर n इज इक्वल टू 0 में ले जा सकते हो। तो जो n2 है वहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 10x स्क्वायर समेशन ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 0। तो ये भी जो सीरीज है ये भी सेम ही सीरीज है, सिर्फ सारे को सारे टर्म को हमने पुश कर दिए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दैट मीन्स जो n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन था उससे भी जो टर्म प्रोड्यूस होगा, तो हमारा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दी पावर n से भी वही टर्म प्रोड्यूस होगा। So up to now is there any doubt or we can continue from here? Okay, I think there is no doubt. So then it is g of x, then minus it is a0 minus a1 of x, then it is 7 of x into this value is again gx and minus it is a0, then it is 10x square into it is again g of x and that value is equal to what, 0. Okay. So then we know the value of a0 and a1 in the questions. It is given a0 is 3 and a1 is also 3, you can put that values there. So g of x minus it is a0 value is 3 minus it is also 3x, then minus 7 of x into g of x minus 3 plus 10x square into g of x is g of x is equal to 0. Now take the gx term together and you will get g of x into here you will get the 1, here you will get the minus 7 of x and here you will get the 10 of x square, and take the other term in the right hand side. Other terms means here minus 3 will be 3, minus 3x will be plus 3x, and here it will be minus minus plus 21x. Okay, so that means, so plus means in the right hand side it will be minus 21x in the minus 21x. So or it will be 3 minus 18x, or g of x will be 3 minus 18x by 1 minus
7 of x plus 10x square. Okay, so that is the expressions what you will get, 3 minus 18x into 3 minus 18x. You can take that 3 together common, but it will be also okay, 10x square minus 7 of x plus 1. Okay, that is the function. Now the problem is we have the function, but we have to build the sequence from there. So that's why you need to partially factorize this. Now we need the partial factorization method. Okay, so up to now, is there any doubt? If not, then we go to the second section of this math, building the sequence from the generating function, what we have already discussed, and here we will use that. Malo, is there any problem? No, sir. Now, No, sir. if not, then go to the second section. In the second section, here our function is the g of x is equal to 3 minus 18x by 10x square minus 7 of x and plus 1. So first factorize it, it will be 3 minus 18x. Then after the factorization, what you will get, that 10x square minus 7x means it will be 10x square. Just take one, 10x square minus 7 of x. 7 means 5 2 minus 5x minus 2x plus 1, or if you take the 5x common, it will be 2x minus 1, and minus 1 means 2x minus 1. So 2x minus 1 into 5x minus 1. Okay, so it will be 2x minus 1 into 5 of x minus 1. Okay, so it is the factorizations. Now what will be the partial factorizations we take? It will be, both are of linear term, so a by 2x minus 1, or first take the 5x minus 1 longer term, a by 5x minus 1 and plus b by 2x minus 1. Is it okay to now? So it will be, so this 3 minus 18x by 2x minus 1 into 5x minus 1 term is now that a by that and b by that term. So again you will take that LCM, 5x minus 1 into 2x minus 1. So it will be a into 2x minus 1 and plus b into 5x minus 1. So that means it will be, if you take the x term together, x coefficient, so x coefficients are 2a and plus here x coefficient is 5b, and the constant terms are minus a, and here you will get the minus b. This is the constant term, and it will be 5x minus 1 into 2x minus 1. Okay. So now you can equate the same or like terms from here. So here the x coefficient is minus 18 and here the x coefficient is 2a plus 5b. So equating the like coefficient, what you will get, 2a plus 5b, that value is equal to minus 18, and minus a minus b, minus a minus b, this term is equal to 3, or a plus b is equal to minus 3. So now you have to solve these two equations to find the value of a and b. So how to solve it? What is the values after solving? So 2a plus 5b is equal to minus 18, and 2a plus 2b will be minus 6, and then just the sign, and you will get 3b is equal to minus 12. No? So b is equal to minus 4, and what will be the value of a? And from here a will be minus 3 plus 4, that means a is equal to 1. So a is equal to 1 and b is equal to minus 4, that is the value of a and b. So that means if you take the partial factorization of the gx term, your gx will be,
So g of x will be, a value is 1, that means 1 by 5x minus 1, and plus b value is minus 4, that means it will be minus 4 by 2x minus 1. Okay. Now you have to express the term like 1 minus 2x, 1 minus 5x, this type of expression. So take one minus common from here. If you take the minus 1 common here, so it will be 1 minus 5x, and if you take the minus common from here, it will be minus of minus plus 4 by 1 minus 2x, or minus of 1 minus 5x to the power minus 1, or plus 4 into 1 minus 2x to the power minus 1. So now you can put the series here, both series, you know the formulas here. So the series are 1 minus x to the power minus 1 series, and it will be sum over that x to the power r only, where r is equal to 0 to infinity, or if you take the n, so it will be n is equal to 0 to infinity. And if you have 1 minus some ex to the power minus 1 here, so your series will be sum n is equal to 0 to infinity a to the power n x to the power n here. So here also you will get the same thing, minus of sum over n is equal to 0 to infinity, then 5x 5 to the power n x to the power n, and it is 5, and here you will get plus 4 into sum over n is equal to 0 to infinity 2 to the power n into x to the power n. Now you can take these two terms together, or you can take this minus also inside, so you will get sum over n is equal to 0 to infinity minus of 5 to the power n, we are taking this together into x to the power n, and plus sum over n is equal to 0 to infinity, we are taking this 4 inside, so 4 means 2 to the power 2, so it will be 2 to the power n plus what, 2 into x to the power n. So now take these two terms together, n is equal to 0 to infinity, we are taking the positive term first, so it will be 2 to the power n plus 2 minus 5 to the power n into x to the power n. So that is your generating series. That means the solution here, we are taking that gx is equal to what? So gx is equal to, we have taken n is equal to 0 to infinity a n x to the power n, and now what we have, that is equal to n is equal to 0 to infinity that into x to the power n. That means our a n is equal to actually 2 to the power n plus 2 minus 5 to the power n. So that is the solution of the series. So you can do it by characteristics method. By the characteristic method actually fails when the system is actually non-homogeneous type. But this is a homogeneous type equations. You can take the characteristic method also to verify this. But in case of non-homogeneous type also you can use this. So we can take one problem and we can give one homework for all of you with that. तो और भी एक दो सॉल्व प्रॉब्लम है जो नोट्स मैंने भेजा है, तो वहाँ पर दिखोगे तो समझ में आ जाएगा. और इन द सिंपल एक्सप्रेशंस, इफ आई want to solve the non-homogeneous type problem also like that, suppose sum a n minus 7 a n minus 1 and plus 10 a n minus 2 is equal to suppose 2, not that is actually 0. So this is a non-homogeneous type problem because there is a 2 expression there. So here also the same things, simply a n x to the power n, then minus 7 a n minus 1 into x to the power n minus 1, not x to the power n, plus 10 into a n minus 2 into x to the power n is equal to 2 into, here you will get the x to the power n. All the things are actually same. So then take the summation here, summation here, summation here and summation here, and the summation will be taken from n is equal to 2 to infinity, n is equal to 2 to infinity and n is equal to 2 to infinity. All the other things are same. Then here also n is equal to 2 to infinity. तो अब सीरीज को कंप्लीट करना है, तो इस सीरीज को कंप्लीट करोगे तो n is equal to 0 to infinity
ए एन एक्स टू द पावर एन दोगे, उसके साथ माइनस ए जीरो और माइनस ए वन एक्स जाएगा। इस सीरीज को कंप्लीट करने से पहले बाहर एक एक्स लेना है, यानी कि यू हैव टू टेक वन 7x आउटसाइड। देन जो सीरीज होगा वो n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी तक ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन जाएगा। देन प्लस यहाँ पर 10x स्क्वायर बाहर लेना है और समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ए ऑफ n माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू जाएगा प्लस इज इक्वल टू, तो ये जो सीरीज है तो ये सीरीज एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, यानी कि 1 और x मिसिंग है, इसमें 1 और x दो टर्म मिसिंग है, तो सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ये 2 जो है बाहर रहने दो, इसको n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n लिखो और इसके साथ -1 और -x दे दो, जो दो टर्म एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया है उसको बाहर अलग कर दो। तो ये टर्म हो गया gx माइनस a0 माइनस a1x माइनस 7 ऑफ x इंटू, यहाँ पर भी सेम केस, तो n इज इक्वल टू 2 मतलब a1 होगा x a1x, तो a0 मिसिंग है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n माइनस a0 मिसिंग देना है पहले प्रॉब्लम के जैसा, और 10x स्क्वायर, ये एक्चुअली सब कुछ यहाँ पर ही है, तो सम ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको तुम a0 एक्स टू द पावर n लिख सकते हो, और इज इक्वल टू ये 2 हो गया, और ये सम ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ x हो गया। तो ये gx माइनस a0 माइनस a1x माइनस 7x इंटू जी ऑफ x माइनस a0 प्लस 10x स्क्वायर इंटू gx इज इक्वल टू 2 इंटू, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n, यानी कि ये 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का फॉर्मूला है ना, यही तो था 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, यानी कि n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n, तो ये यहाँ पर पुट कर देना है कि ये हो गया 1 बाई 1 माइनस एक्स देन माइनस 1 देन माइनस एक्स। तो अब a0 और a1 का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा, a0 इज इक्वल टू सपोज 3, a1 इज इक्वल टू सपोज 3 लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो a0 की जगह पर वैल्यू पुट करो, a1 की जगह पर वैल्यू पुट करो, a0 की जगह पर वैल्यू पुट करो, यहाँ से gx को कैलकुलेट करो, फिर ये सॉल्व हो जाने के बाद gx को पार्शियल फैक्टराइजेशन करके सीरीज को जनरेट करना है। सो दैट इज द मेथड।